All right, मेरा बच्चा. So all of you can see this screen. So I hope this is visible to all of you. Today we are going to officially start our graph portion. After studying coordinate geometry, we paused topic number 2, which was algebra and graphs. हमने इसको रोक दिया था थोड़ा टाइम के लिए, and we wanted to make sure that we understand the concept of coordinate geometry before going to proceed with the graphs further. You can see one thing that topic number 2.9 is graphs in practical situation, which is kinematics, which is speed time graph, distance time graph, and acceleration, etc. And the second we have is the graphs of function, which is construct table of values and draw, recognize, interpret graphs for function of the following forms. This is exponential function, includes sum of no more than three or these, and a b x plus c. Okay, examples includes cubic graph. Examples include reciprocal. Example includes exponential graphs, where a and b and a and c are rational numbers, and b is a positive integer. So solve associated equations graphically, including finding and interpreting roots by graphical methods, finding the intersection of a line and a curve, and draw and interpret graphs representing exponential growth and decay problems. So these are the graphs which we are going to study today. And inshallah, it would be a fun, and inshallah, you will see that we will understand each and everything, because we know that how to solve them manually. हमें मैन्युअली सॉल्व करना आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको जो है थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना है, ताकि वी गेट द आइडिया दैट हाउ ग्राफ्स आर यूज्ड, कि ग्राफ्स कैसे इस्तेमाल होते हैं. अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? सो प्रोसीडिंग, सो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक ग्राफ्स. फर्स्ट वन इज quadratic graphs. Beta, what quadratic graphs are? Please pay attention, everybody. Beta, quadratic graphs are ax square plus bx plus c. This is what a quadratic equation is. Understood everybody or not? बेटा सबको समझ आ रही है? जरा मुझे बताइएगा साथ साथ प्लीज. जी सर. If the value of a is positive, अगर आपकी value of a जो है वो positive है, so your graph will be like U shape. ये U shape graph बनेगा. Understood बदान? And if the value of a is negative, so the graph will look like this. Understood? Yes sir. Understood? So what will happen, everybody? I'm going to take a page here. मुझे यहाँ पे एक page attach करना है. I need a square paper, narrow corner. I think square paper is perfect. Let's see. So everybody, please pay attention. I'm going to draw the graph of question is draw graph of y equals x square, y equals x square plus 5x plus 6 for x equals, for x greater than or equals -3 and less than or equals to +3. सर ये स्क्रीन सिर्फ मुझे शो नहीं हो रही है, बाकी को भी नहीं हो रही. सर ये शायद आपसे ये स्क्वायर एक मिनट पेपर भैया, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा. स्क्रीन स्टक है. एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा. बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? जी सर, आवाज आ रही है. तो आवाज आ रही है चले, आपकी. बस ठीक है. एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा क्योंकि स्क्रीन स्टक हुआ है. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आईपैड से लीव करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ. ओके सर.
Actually, it was raining today in Peshawar, ना? पेशावर में आज बारिश हो रही थी। जी सर, मैंने देखा। देखा? बारिश देखता है कोई? नहीं, मैंने पिया भी है। ऑलराइट, एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? जी सर। ओके, एक मिनट सब्र करते हैं, देखते हैं कि शायद, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा इंटरनेट में आज प्रॉब्लम है। ऑलराइट, draw the graph of x square plus 5x plus 6 for x is greater than or equals to minus 3 and less than equals to 3. So everybody, this is my y-axis and this is my x-axis. X is negative 3, so minus 1, minus 2, minus 3, positive 1, positive 2, positive 3. That's it. So we need a table to draw a graph. हमें graph draw करने के लिए हमें table चाहिए होता है। So हम table draw करेंगे यहाँ पर, और एक table मैं आपको calculator में भी draw करना सिखाऊंगा अभी। आप लोग मुझे देखिएगा खाली। So the values are minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and 3. Now, beta, how to find out the values? Just look at the calculator screen, please. Okay. So, सर इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर में ही आएगा? नहीं बेटा, कैलकुलेटर के अंदर नहीं आता, मतलब इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको पेपर कौन सा दिया हुआ है उन्होंने। अगर सिंपल होगा तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा फिर, ठीक है? फिर तो 1 2 3 डाल के आ जाता है। Hello, sir. या आप, Are you able to hear me, sir? या Okay, sir. Thank you. Alright, so it's bracket x square. In place of x, I'm putting the value of x minus 3 plus 5 bracket negative 3 bracket close plus 6. Now what is I'm doing beta? I'm just putting x is equals to minus 3 in this equation, and I want to see that what would be the output, and the answer is 0, and the answer is 0. So this point I have 1 point which is 0. Okay, now I want to replace this value with negative 2. So I'm replacing minus 3 as minus 2. And let me write minus 2 again here. It is also 0. Okay, now put negative 1, and this is also negative 1. So Laluna, the answer is 2. Let me put at 0. So let me put this one as 0 here as well. 0. So instead it is 6. Let me replace that with 1. And let me replace that with 1. Isn't it time consuming? Yes, sir. And then we Yes, have sir. to do this as 2. And look at this. I have to plot 2. It's 20. Okay. So let me put this one as 3. So let me finish it first, and then then I will tell you the shortcut. So 3 is 30. Okay, beta, it was fine, but it was very time consuming. Agree? So we have the calculator, so we should know the techniques of it. So beta, press the mode button in the calculator and look at the table option. In your calculator at 7, you will see a table option. In my calculator, my table is at 9. So I'm pressing 9. You should press only 7. Agree? Mode and then press 7. So I hope all of you got the same thing in the calculator screen. Understood, everybody? Now there is a time to put this function in the calculator screen. So it's x square. I can see x behind the bracket. So I can press alpha and then this bracket. So it would be x that takes square.
It's plus 5 and then alpha in this bracket x and plus 6 equal. I don't have another function right now, so let's put equal to. Okay, my calculator says start. But then you can see that start of the table is -3. Agree? Yes, sir. And Exactly. equal दबा दें, end of the table is +3. Okay. Step 1 is fine because I want one jump. So press equals to. See, whatever table I have in my notebook, I have that table in my calculator screen. Can you see that, everybody, or not? Sir, Yes. can you show once more how to do it, please? Okay, please pay attention. Press the mode button, then press table. In my calculator, it is at 9. In your calculator, you can see at 7. Have you got the same thing in the calculator or not? Yes. Yes, sir. Okay, now plot the function. It says x square. So alpha and bracket, it is x. Now take square of it plus 5 and then alpha in bracket, I need 5x and then plus 6. So now I have the function already. So start the table now. Start the table from -3. Put equals to, end the table at +3. Put equals to, one step is fine. Press equals to one time. You can see that there is a table in your calculator. Agree or not? Yes, sir. Got it. All सर right. एंड So पे एंड पे आपने क्या लिखा है? 5 लिखा है. क्या मतलब एंड पे क्या लिखा है? स्टार्ट पे तो आपने -3 लिखा है ना? एंड पे मैंने +3 लिखा है क्योंकि टेबल का एंड +3 पे हो रहा है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. Sir, और स्टेप स्टेप आपने 1 स्टेप 1. इक्वल sir, दबा how दें तो do I टेबल आ find? गया. यस सर, बन गया. All right. Now it's time to plot the values. So let's plot the values. So I have -3 as 0. So beta -3, x is -3. Let me plot these values as 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ramin, -3 is 0. So this is the point I'm gonna circle it. -2 is also 0. So okay, I have on the calculator screen. -2 is also 0. Okay. So what is -1? -1 is +2. -1 is +2. And 0 is 6. 0 is 6. Now you can see one thing that I have this kind of a graph. And everybody, Ramin, can you hear me? Ax square plus bx plus c. जी sir. The value of a is +1. So the graph should look like u. Agree? जी Agree. So it means that half of the u is in front of you. Can you see that? जी sir. Half of the u is in front of you. It means that, Vadan, that the other half will be at the left side. Agree or not? यस. So this is what the graph of this function is. Understood? I cannot draw -4 because I do not have taken the value of -4. अगर आप मैं -4 ले लो तो टेबल में आप जरा चेक कर सकते हैं कि मैं टेबल चेंज कर सकता हूँ कि I can start the table from, let's suppose, -5 and ending the table at the same +3. So see, -5 is +6. तो मैं यहाँ पे जरा इसको एक स्टेप दे देता हूँ. देखिए जी बेटा, -4 and this is -5. So Vadan, -5 is +6. Can you see that? And -4 is +2. -4 is +2. So everybody please pay attention. It's a very tricky kind of thing that I'm going to connect with that thing. La Luna, can you hear me? Now, beta, you need to Yes sir. understand one thing, that this graph, from this point to this point, the gradient of the graph is 0, and till this point, and at the turning point, the gradient is 0. Sine, from this point till this point, the gradient of the graph is negative. Okay, it's not 0. My bad. Agree? At that यस सर, Yes, yes, particular जीरो तो sir. तब point, होगा जब लाइन जी हॉरिजॉन्टल होगी. जी, और इस पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जैसे फ्लैट खत्म हो जाएगा. ठीक है? And from that point to that point, the gradient is getting positive and it will get steeper and steeper. Okay? Okay, everybody? Ji, sir. Ji. यस. Okay. So the graph has 3 portions now. We need to explain them like this. Just give me a second. Okay. So at this, gradient is negative.
Agree? At this, which is called as the turning point, gradient is 0, slope is 0. Sir, I Remember have a that? doubt. Yeah, please. And at this Sir, point, the gradient is positive. Yeah. sir, won't the parabola be in the middle of the graph? Like, won't its It's not apex? necessary. It's not necessary. Okay. Okay. It's not But what? necessary. Yes, sir, but the arc won't go below the x-axis, will it? It can go. The graph can be something like this. Okay. Oh, okay, sir. Sir, The graph can be something like this. Agree? Yes, sir. The Okay. graph can be something like this. Agree? Yes. But it Sir. will be U. Understood? What about upside down U? It would be a negative equation. I can draw the same equation and you will see that the equation will have the same values. Agree? But in a flip position. Understood? So it'll be the inverse of it. It would be the inverse. Okay. Got it. All right. So this was the discussion about the Sir? quadratic graph. So any problem so far? Anyone? सर एक सवाल है सर ये जो कैलकुलेटर पे Yes, जैसे कि please. कैलकुलेटर पे लिखा है ना 1 2 3 4 फिर उसके बाद x के नीचे नहीं कैलकुलेटर खोल देना सर। अच्छा, एक मिनट सबर, मुझे क्या पता था कि कैलकुलेटर के क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक मिनट जी। हाँ सर आ गया था। सर जैसे कि देखिए अब आपने टेबल बनाया ना x और y, तो टेबल में x के -3 है और x के -3 के सामने 0 है, लेकिन टेबल में तो ना मेरा -3 है और सामने 12 शो हो रहा है। आपने टेबल गलत बनाया बेटा। अच्छा सर। सर देखिए आप मेरे साथ करें, जी सर। ठीक है? सर चलें जी। प्रेस मोड बटन, सर देन जी प्रेस सर। टेबल। एक मिनट बेटा, वन जी सर। क्वेश्चन एट अ टाइम। प्रेस मोड बटन, देन जी प्रेस जी। टेबल। तो टेबल मेरे कैलकुलेटर पे 9 पे है, इन योर कैलकुलेटर इट इज एट 7। एग्री? यस सर बिल्कुल। You got the same thing, the thing I got? यस सर fx इज इक्वल टू 0। Now press alpha in this bracket। तो x आ गया कैलकुलेटर पे? यस सर Okay, अल्फा now एंड ब्रैकेट ओके। okay, now take square, x square ऐसे ही लिखा है। यस सर ठीक हो गया। Okay, plus 5, अब लिखो alpha and x, any problem? डन सर। And then plus 6, ओके any problem? नो सर। And equals. इक्वल्स So start of the table is -3, -3 end of the table is +3, +3 step is 1, equal दबा दें। So see, ओके have you got the same things or not? यस सर अब ठीक हो गया। Okay. थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ओके जी, क्या नाम है? साइम। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाउ डू यू टाइप x ऑन द कैलकुलेटर? आई सॉ योर क्वेश्चन नाउ। हाँ सर, वो तो पता चल गया। ओके देन। सर मेरा सवाल ये है कि ये ग्राफ्स तो हमारे लिए पहले से ड्रॉ हुए होंगे ना? यस, ग्राफ ड्रॉ है, मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, क्योंकि इतना आइडिया होना चाहिए। पेपर में अच्छा, यू हैव मगर द ड्रॉ ग्राफ करने पेपर। नहीं पड़ेंगे? नहीं, ड्रॉ नहीं करने पड़ते, ग्राफ पहले से बने होते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है, सर ओके सर ये चलें जी। जी बेटा बोलें। सर ये जो इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5x प्लस 6, तो अगर हमसे मतलब पेपर में ये पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन आप इसका टर्निंग पॉइंट या फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएं। बेटा आप ओ लेवल्स कर रही हैं कि IGCSE कर रही हैं? ओ लेवल्स। ओ लेवल्स कर रही हैं। ओ लेवल्स में ये नहीं पूछेंगे, ठीक है आपसे। अच्छा ठीक है। IGCSE वालों के सिलेबस में टर्निंग पॉइंट हैं, लेकिन आप लोगों से टर्निंग पॉइंट की नॉलेज पूछी जा सकती है। ठीक है? सर वही पूछ रही हूँ ना सर, फिर वो और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी ना बेटा। अभी आप पहली पहली क्लास में हो अभी ग्राफ में। सर ये ओ लेवल्स का मैथ्स पेपर इजी होता है या IGCSE वाला? बेटा दोनों पेपर इजी होते हैं, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है? जी सर। सर ये IGCSE और O लेवल में क्या फर्क है? बेटा कोई फर्क नहीं है, बस ये याद रखें कि एक ही माँ के दो बच्चे हैं। Sir, जी बेटा सुन रहा हूँ बेटा। sir, can you send the paper number in the Zoom chat? I'll take a printout of it. बेटा दिस इज नॉट अ पेपर नंबर, इट्स अ वर्कशीट, इट्स अ रैंडम Yeah, वर्कशीट। sir. जस्ट पे अटेंशन बेटा, Video just number. pay attention, it's a worksheet, it is the basic worksheet, it is not a past paper। ठीक है?
Yes, sir, but whenever you do this, I take a printout and I do it with you. I find it easier. Okay, but not today. Just listen to me very carefully. This is the first time you are understanding graphs, okay? Okay, sir. Okay, so please pay attention, everybody, and no one is allowed to turn on the mic for a minute. Complete the table for the values of y is equals to x square negative 1. So all of you, you can see one thing that I saw, that this is x square negative 1. It means that the coefficient of ax square is positive. My graph will look like that. Agree, everybody? And then I'm going to plot the table. Let's see that what it's gonna be. So it would be alpha bracket x squared negative 1. I'm starting the table from negative 2. Oh, sorry, I don't have another function. Okay, so you can try myself with me. Minus 2. End of the table is positive 3. And step 1 is fine. So you can see one thing that I got the table. Minus 2 is positive 3. Negative 1 is 0. Okay, 0 is negative 1. We can see that x is 1, y is 0. Go down and plot the numbers. So 2 is 3 and 3 is 8. So 2 marks for that completion of the table. And then we have to plot them. So please be careful, everybody, while plotting, because it is very much easier, but at the same time it is very much tricky. So when x is minus 2, step was 1, obviously. X is minus 2, so y is 3. So this is minus 2 and this is 3. So this is the point which is minus 2 and 3. So I hope after coordinate geometry you guys understand this. X is minus 1 and y is 0. So x is minus 1 and y is 0. This is the coordinate. The circled ones are the coordinate, okay? And 0 and negative 1. 0 and negative 1. So this is the coordinate, 0 and negative 1. Then we have 1 and 0. X is 1, y is 0. This is x is 1 and y is 0. Okay. Then we have 2, 3. X is 2, y is 3. So this is x2 and y3. And the last one is x is 3 and y is 8. So this one, this is the dot, and I'm going to make it a circle here. Now, you can see, everybody, again, it's a straight U, okay? It's not a flipped U. So let's make it, and you cannot use a ruler here. आपने मेरे कैलकुलेटर में टेबल रेंज नहीं आ रहा. आपका कैलकुलेटर कौन सा है बेटा? आपके पास मेरे वाला कैलकुलेटर है कि वो नॉर्मल मैट्रिक वाला कैलकुलेटर है? सर आपसे अच्छे वाला कैलकुलेटर. बेटा आपको नहीं कह रहा मैं. मेरे से अच्छे वाले का क्या मतलब है? पहले ये मुझे बताओ. Sir, I have a question. Yes. Sir, do we do this freehand or should we use a compass? Beta, I told you few seconds ago that do not use a ruler. It should be freehand. Is this clear? Okay, got it, sir. So from point to point, just go and you have to turn the graph like this. Beta, remember that camera teacher, he also understand that this graph is drawn by a student who is 15, 16 years old. Okay. So this is a U graph in front of you. And Vadan, this equation is x squared negative 1. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. X square And negative. Vadan, the same equation is having this kind of a thing. Agree or not? Exactly, sir. Okay, now beta, how it saved us? Just pay attention, everybody. You can see one thing that in this graph, we can save our time. Like for example, everybody, if there was a question in exam like Ramin, it was x square plus 1 equals 0. Agree or not? So I would have done this question as x square is equals to plus 1. Am I right? So taking square root on both sides, so square root cancels, so x is equals to square root 1. So square root 1 can be minus 1 and square root 1 can also be plus 1. Agree or not, Vadan? These two would have been the answers if it was without graph. Agree or not? Yes, sir. Can you see, everybody, that y is written in place of 0 here? Can you see that? Yes. And look at this. Y is 0 at these 2 points and it is x is plus 1 and it is x is minus 1. Can you see that, everybody, or not? Yes, sir. Exactly.
So it means that solving equations with the help of graphs, it's very easy. Proceeding. I'm not drawing the second one. You have to draw yourself. So not drawing the third one as well. Fourth one, fifth one. Let me try this one. Question number 6. All right. You can see everybody that the table in front of you is having an equation. What if the question is without calculator and you have to complete the table? What if the question is without calculator and you have to complete the table? You It's very easy. substitute the x value. Yes. So substitute x value. So you have to substitute only 2 times because only these 2 boxes are incomplete. But be careful for one thing. Y is equals to 4 minus x square. So y is equals to 4 minus x itself is negative 2 square. So y is equals to 4 minus into plus 4. So y is equals to 4 minus 4 is 0. Understood everybody? Now y is equals to 4 minus x square. Vadan, y is equals to 4 minus 2 square. Y is equals to 4 minus 4 minus 4. So the answer is again 0. Can you see that? Now I can see one thing, that the coefficient of x square is negative 1 this time. Laluna. So my graph will look like that. Do you agree with me on this statement or not? That the coefficient Yes. of Yes, x square sir. is negative Yes, this sir. time. So सर let वो me plot उसकी that. वजह ये है कि x के साथ हमेशा gradient connected होता है तो gradient is नहीं negative. नहीं, that is not the reason. That is not the reason. अब वदान जरा गौर कीजिएगा अच्छा. डिस्कशन प्यारी हो रही है तो इसीलिए कर रहा हूँ. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4. कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? Yes. Now, beta, you see that the quadratic equation is ax square plus bx plus c. Agree or not? Yes. Ramin, y is equals to minus x square plus 4. We have 0x in there. Agree or not? We do not have any 0x. Agree? Yes. Yes. This negative shows that the graph will look like that, and this c is plus 4. It means that u will cross from 4. Agree? Yes sir. मतलब And 4 के c, साथ वो cross करेगा. yes. तो देख लो 0 4 नजर आ रहा है नीचे कोऑर्डिनेट्स में. Yes sir. So x is minus 3, y is negative 5. So minus 3 and negative 5 is this point. And then we have minus 2, 0. X is minus 2, y is 0. Then we have minus 1 and 3. Minus 1 and plus 3. So minus 1 and plus 3. 0 and plus 4. See, the graph is crossing or not? ये Yes sir. ऊपर वो नजर भी आ रहा cross हो था. गया. जी बिल्कुल. X is 1, y is 3. And x is 2 and y is 0. X is 2 and y is 0. Ramin, can you hear me? Yes, sir. Okay, so please pay attention, acha. G. See that I'm going to draw you. Please turn the graph. Agree? अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाए ना तो कोई इतना एरर नहीं आता, लेकिन ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए. अच्छा Sir, your voice is echoing, sir, sometimes. सर I मैं इस don't पे know. कि वाई के जो मिसिंग पार्ट्स है आप किस तरह फाइंड करते हैं? बेटा मिसिंग पार्ट से कैसे फाइंड करते हैं ये बताओ मुझे जरा. क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? सर ये जो -2 है इसके नीचे 0 फिर उसके 2 के जो नीचे से. अच्छा देखिए मेरी बात सुने जरा प्लीज. First of all, the last point I have is till this point. Yes or no, Muid? So we cannot extend the graph. Agree, Muid? यस सर. हम ग्राफ को एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज द लास्ट पॉइंट इज हियर. तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि जरा ग्राफ सेट लगे. ठीक है? सर लेकिन लेकिन assume तो कर सकते हैं ना कि नहीं वो नहीं. हाँ बेटा, ऑब्वियसली बेटा, रिमेंबर वन थिंग एवरीबॉडी. Ramin, this is also a very tricky question from paper point of view. Acha, you can see one thing that this is the half of the graph. Can you see that? G, sir. So the other half will be here. Understood? Agree or not? Yes. Yes sir. It would be a perfect U. ये बिल्कुल perfect U होगा. समझ आई? Yes sir. And Sir, remember one thing, Avinash, that this line can be the line of symmetry of the graph. Agree or not? yes, sir.
It can be or it cannot be. It depends from question to question. And later on in questions, we are going to discuss these things. Okay. Yes, sir. One doubt. So wait a minute. Let me clear your doubt. Can you see that this is x is equals to -2 and this is x is equals to +2? Agree? Yes, sir. Arom, mera bacha, if I had the question like this, solve x square, wait a minute, -x square plus 4 equals 0. Arom, I would have done this question this way. Do you agree with me or not? Taking square root on both sides. So x would be equals to plus minus 2. Agree or not? Yes, sir. So Arom, can you see that you have got two answers? One is +2 and one is -2. Yes, sir. And at this point, y is equals to 0. This is what the concept of graph of function is. Solving equations with the help of graphs. Agree? Not using any specific steps, just to have the knowledge of it. Understood? चलें जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था ड्राइंग क्वाड्रेटिक्स का। चलें जी, एक क्वेश्चन हम लोग दूसरा टाइप भी उठाते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं साथ साथ। अभी तक जिसको समझ नहीं आई तो बेटा मुझे बताइएगा ज़रा। ड्रॉ लाइन कॉर्वेट मैथ्स। मैं पहले वर्कशीट्स कराएंगे, फिर उसके बाद आपको पास पेपर दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि फिर वर्कशीट में इजी होता है जी। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, सो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। All right. So everybody on the grid, the examiner is saying draw the graph of x is equals to 3. So please pay attention. It's x is equals to 3 is a line. So you have to use ruler for that. So x is equals to 3. It is right in front of you, Arsalan. So x is equals to 3 is a vertical line here. Understood? So this is x equals Yes, 3. sir. Okay. Then we have on सर the grid इसमें draw the line. G. सर इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब चेंज नहीं होगी, और y चेंज होता रहेगा ना? Yes, बिल्कुल, इसीलिए ये वर्टिकल लाइन बनता है। आप तो देखें यहाँ सर पे इसका y इस तरह के वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, कोई ग्रेडियंट नहीं होता, ठीक है? ओके सर, मैक्सिमम ओके कहते हैं हम सर। इसको। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल का लाइन तो ऑफ 0 होता है। हॉरिजॉन्टल का 0 होता है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। सो बेटा y इज इक्वल्स टू 1 इज दिस लाइन। अग्री? दिस इज y equals 1. Y is equals to 1 remains constant and x coordinate at every point on this line will change. Write down the coordinate of the point where the two lines meet. The two lines met. So they met at 3 and 1. Agree or not? X is Yes. 3 and y is 1. So this is the point of intersection. At these 2 points, these two lines are equal. It means that this is the solution of this line. These two lines. सर मुझे Proceeding. समझ नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे जो x इज इक्वल टू 3 की लाइन है, Mm-hmm. इसमें क्या सेम होगा और क्या चेंज नहीं होगा? मेरा बेटा वदान ने कहा है कि सर x इज इक्वल टू 3 में जो है ये x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। हमारी ये डिस्कशन थी, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे y भी होगा। कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे होगा 3 1, यहाँ पे होगा 3 2, यहाँ पे होगा 3 3, यहाँ पे होगा 3 4, यहाँ पे होगा 3 5, यहाँ पे होगा 3 6। एग्री? तो y सेम होगा ना, x तो चेंज होगा। y चेंज हो जाएगा बेटा, y चेंज हो रहा है, x तो नहीं चेंज हो रहा है, x तो आपका सेम है ना। एग्री और नॉट? अच्छा ठीक है। And look at this line, y is equals to 1. Y is not changing, but x is changing. Agree or not? जी सर ठीक है। Acha. Here is a table of values for the equation y is equals to 2x plus 3. So exam is saying draw the graph of for values of x from 0 to 4. Better to draw lines, we need to at least 2 points. Acha. Only put 2 points and just draw a line. So draw the graph. So 0 3, x is 0, y is 3, and we can see that Umar here that y is equals to mx plus c is equals to 3. Can you see that? So it means that the graph will intersect this point in the graph. Agree? 0 3. And it is positive 2x. So I need one more point, Umar, which is for example x is 1 and y is 5.
I have done this. X is 1, y is 5. So X is 1, Y is 5. So Mushkan, 1 and 5 is already plotted. So Laluna, with the help of a scale, I'm going to connect these two dots. Any problem? So beta, try to be as much as an accurate, please. जितना accurate रहेंगे उतना अच्छे results आएंगे आपके, ठीक है? So that's the way to draw the line. And for example, Vadan, if you can ask me a question that sir आपने सिर्फ 2 points put किए हैं. In order to draw a line, we need at least 2 points. Agree? So for example, if I put the third one and you will see that that point will lie on the line where x is 2 and y is 7. Check. X is 2 and y is 7. So see that this point is somewhere on the line. Agree or not? यस Yes or सर। no? और सर ये 3 को कट कर रहा है तो इसीलिए सी की जगह 3 है। वाई एक्सिस पे 3 को कट कर रहा है तो वहां पे ऊपर 3 है बिल्कुल। ना सी। और अगर वहां पे 3 लिखा भी था और ना भी लिखो तो देखो पहला कोऑर्डिनेट ही 0 3 है। जी सर। ओके, ऑन द ग्राफ कंप्लीट द वैल्यूज ऑफ द टेबल। तो पहले टेबल कंप्लीट करना है। So y is equals to, so remember one thing, we are understanding one thing here. In order to draw the graph, we need to make a table and then we'll complete it and then we will draw it. So once the table is already drawn, but in the later on questions, examiner will say us draw the line, for example, line L. So we will take our 2 points of our own choice in order to put them in the graph and maybe we'll make the line with the help of ruler. So y is equals to 2x plus 4. Calculator is not allowed, so I have to put the value of x, which is negative 1 plus 4, negative 2 plus 4. So the value of y is plus 2. Okay, let's find out the another box. Y is equals to 2 bracket 1 plus 4. So y is equals to 6. Okay, plotted. So now y is equals to 2 into 2 plus 4. So y is equals to 8. So now my graph is plotted. So let's do that. Minus 1, positive 2. X is minus 1, y is positive 2. Done. 0, 4. X is 0, y is 4. Done. X is 1, y is 6. Done. X is 2, y is 8. Done. See, Vadan? All the points are जी on the line. Agree? अच्छा सर, इसमें लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसलिए वो 2x पॉजिटिव है। हाँ, देख लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लियर हो गई नहीं ये चीजें आपके नहीं। जी सर बिल्कुल। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ आ गई ना, इसीलिए आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि लाइन ऊपर जा रही है तो इसीलिए ग्रेडियंट पॉजिटिव है। वाई इंटरसेप्ट को 4 से क्रॉस कर रही है, इसीलिए द वैल्यू ऑफ सी इज 4। अग्री? Sir, यस सर। यप। sir, this you don't need to plot all the dots, no, sir? Or should you plot? Yeah, listen to me very carefully. I gave you an idea that we don't need all the points to be plotted in order to draw a line. Agree? All we need is 2 good points. Agree? To draw a line. But if the question is complete the table and draw the graph. Agree? Yes. And can you see that the question said it to me here for the values of x from -1 to 3. So that is the reason I was bound to plot all the points. Agree? Ah, okay, sir. But if there is a question, draw a line this. So then you are not bound to draw 5 points or 6 points. You just take 2 points, draw a line, and that's it. Game finished. Yes, sir. Like, let's see. It says that in question number 4, plot the point with the coordinate 3 and 5. So x is 3, y is 5. So this is the point they are talking about. And label the point P. Okay, that's the point P. Then, does P lie on the line y is equals to 2x minus 1? Explain your answer. So we have to plot it first. So in order to draw a line, Vadan, I told you I need 2 good points. Do you agree with me or not? यस सर। So let me put x is equals to 0. If I put x is equals to 0, y would be negative 1 for sure because the value of c is minus 1. Agree? यस सर। If I put x is equals to plus 1, so 2 ones are 2 and 2 minus 1 is 1. Agree or not? I got my 2 good points, which I want to put. Avinash, please copy. Yes, sir. Yes, sir. I'm doing it. Okay, so 0, negative 1. So 0, negative 1 is this point and I crossed it. And 1, 1 is this point, I crossed it. And let's see whether the line point P, they lie on the line or not. So we have to check with a ruler. Check that. Yes or no?
Yes, sir. Yes. This is one method. This is what? This is method number 1. ठीक है बदान? Yes, sir. This is method number 1 to check whether the whether the point lie on the particular line or not. ठीक है बेटा? This is method number 1. Understood? Yes, sir. Now, Ramin, as we know that we are given with the equation of line, which is y equals 2x negative 1. Can you see that, Ramin? जी सर। So put coordinate of p, which was 3 5. If the left side and the right side of the equation remains same, so that particular point is on the line. Understood, Aline? So 5 is equals to 2 times 3 minus 1. So 5 is equals to 6 minus 1. So 5 is equals to 5 or not? So my answer is yes. P lies on line. Agree? सर ये तो फिर इजी मेथड था ना। इजी मेथड से दोनों तरीके सिखा रहा हूँ ना। एक लाइन के जरिए भी देखो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। पहले लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक चीज से 2 शिकार किए हैं। आई टोल्ड यू दैट हाउ टू ड्रॉ द लाइन विद 2 पॉइंट्स। फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी सिखाया उसका, ठीक है? अच्छा ऑन सर, द इसमें ग्रिड, क्वेश्चन एक सर मिनट सबर इसमें करें बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन एंड करने दे पहले। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन y is equals to -4. तो y is equals to -4 would be a horizontal line because y is equals to -4 would be this line. Agree everybody or not? Y is equals to Yes. -4. So जी now question time। जी बेटा बोल लें। सर मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि डस p lie on the line with equation y is equal to 2x minus। तो सर ये वो ऊपर वाले पॉइंट p की बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले पॉइंट p का एक लाइन ऑफ इक्वेशन y is equal to 2x minus 1 है। क्वेश्चन ये था ना सर? क्वेश्चन था कि क्या पॉइंट P जो है इस लाइन पे आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने पहले वो लाइन ड्रॉ किया, हमें नजर आ गया कि वो आ रहा है। एग्री? जी सर। एग्री। फिर हमने उसका मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ग्राफ ना हो तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप। तो आपने कोई भी पॉइंट अगर प्रूव करना है कि वो उस लाइन पे आता है कि नहीं, तो आपने उसको इक्वेशन ऑफ द लाइन में पुट करना है। अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑन द लाइन। एग्री? ओके सर, तो ये तरीका है मतलब कि उसको यस, दोनों साइड्स अगर एक साथ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे लाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। Sir, doubt, sir. या प्लीज। Sir, so for showing that the point P lies on the line, are we supposed to draw the line on the graph and show it also? Is it required? For example, there are 2 scenarios now. If you have the graph in the paper, so you can use that. Agree? But Okay. if for example, if there is no graph and the question is related to a coordinate geometry question without any graph, so then you have Okay. to proceed the methodology. Okay? Yes, sir. Got it. All right. So please pay attention. Khushi, I hope you can hear me. On the grid, draw the graph. Y is equals to -2. So y is equals to -2 is this line. So this line is y is equals to -2. Complete the table for the values. Y is equals to 3x plus 1. So put values of x one by one. So y is equals to 3x plus 1. Let's put -1 first. So y is equals to 3 bracket -1 plus 1. -3 plus 1. So y is equals to -2. Then y is equals to 3x plus 1. Put x is equals to 0. So 3 zeros are 0. 0 plus 1 is 1. Then y is equals to 3 times 1 plus 1. So 3 ones are 3. 3 plus 1 is 4. Let's put x is equals to 2. So y is equals to 3 times 2 plus 4. So y is equals to 6 plus 4. So y is equals to 10. So you have to plot and then on the grid draw the graph. So we are bound to put all the points now. So it says that x is -1 and -2. So let me plot with another color. So let me use a green one. -1 and -2 is this point. 0 1 is this point. 1 4 is this point. And 2 10. 2 and 10. So I don't have 2 and 10 available in the question. Yes or no? यस सर। सर इतना तो इनफ होगा क्योंकि वो नहीं नहीं, सी हमसे भी गलती हुई है, गलती हो गई हमसे। ये 3x plus 1 आता है यहाँ पे।
हमने 3x+1 हमने +4 लिख दिया था। तो यहाँ पे 7 आता है, x is 2 and y is 7। हाँ, अब ठीक हो गया ना? यस सर, अब कंप्लीट हो गया। So Vadan, यहाँ पे we are going to draw the line. So the name of this line is y is equals to 3x+1, ठीक है? And you can see one thing, everybody, that -1 and -2, x is equals to -1 and y is equals to -2. It is the point of intersection of these two lines. So this is the solution of these two lines. Understood, everybody? यस So that's how we are done. So again, we have a question. It is y is equals to half of x plus 1. So again, you have to just plot the table and then you have to complete it by your own. Agree? So I'm leaving this for you guys. Okay, you guys will complete. Question number 7 is negative line because it is a negative gradient and it has a lot of values. So for example, you can see one thing that Aline and Arom, that I have 2 points, 3 points already available. I can draw the line. Agree or not? Yes, sir. Like you can see one thing that it is 2, 7. So x is 2 and y is 7. So this is 2. So let me connect 2 with 7. So this is 7 here. So it means that my point would be 2, 7 over here. Agree or not? And then I need another point which is 3, 5. And these 2 points are more than enough in order to draw a line. ठीक है Vadan? Can you see that these 2 points will help me to put a ruler in a particular direction? Agree? क्योंकि in order to draw a सर line, बेटा 11 के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि बस 0 ये 11। खुद करेगी कनेक्ट बेटा, ये हम नहीं करेंगे। जी जी ये सर, हाँ लाइन खुद जाएगी, ये खुद जाएगी अपनी मोहब्बत के पास। All right, can you see that? So the name of this line is, wait a minute beta, y is equals to -2x plus 11. This is the equation of this line. And we drew the line with the help of only 2 points. And I told you the way that how it can be done. Agree? यस हाँ जी। अब बताएं जी, क्वेश्चंस लेता हूँ। Yes, सिर्फ ये sir. वर्कशीट कंप्लीट कर लेना प्लीज आप लोग खुद ही जी। Sir. So for this line drawing and writing the coordinates above on the table, why can't we Mm-hmm. draw the line first and then write the rest of the coordinates? Won't that be easier? Yeah, that would be easier, but remember one thing, bacha. If you, for example, if your line is not correctly drawn, agree? Ah, So don't you think that you will get the wrong coordinates? yeah, I might. Agree or not? Yes, sir, agree. Because remember one thing, that we have multiple scenarios in order to solve a particular question. But as a student, we need to take that kind of a scenario which is having less errors. Okay. Yes, sir. So you can see that the whole worksheet is on the drawing the lines. Please do practice 1 or 2 questions before tomorrow's lesson, because tomorrow we are going to start. We are going to practice reciprocal and exponential graphs, and then after that, I'm gonna touch the past papers. Okay? Is this clear, everybody, or not? Sir, are we done with Yes, sir. differentiation? What? Sir, are we done with differentiation? No. We are not done with the differentiation. After graphs of function and graph and practical situation, we are going to do sketching. And after sketching, we are going to do the differentiation. And we are done with the topic number 2. Topic number 3, coordinate geometry, is already finished. So inshallah, Allah ne chaha to inshallah coming Monday ko I will be starting topic number 4, which is geometry. Understood, सर everybody, or ये not? सर Yes, ये sir. मैथ्स का ये फुल कोर्स कौन से महीने तक खत्म हो जाएगा, कि मतलब ईयरली? Beta, inshallah ta'ala, according to my plan, inshallah 30th March, inshallah हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा. So from 1st of April जो है until 2nd of May, we will be doing yearly past papers only. ठीक है? सर Until मतलब एग्जाम के दिन तक? एग्जाम के हाँ जी, 7 मई को हमारा पेपर है, तो 7 मई तक इंशाल्लाह ताला हमारा पेपर, हमारी जो है ना क्लासेस जो हैं वो रहेंगी. और आगे इंशाल्लाह ताला टाइम मिलेगा तो फिर 2-2 3-3 घंटे की क्लास भी लूँगा.
कल भी मैंने क्लास लिया था, आप में से कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया था, तो कोशिश करा करेंगे ज़रा अपने आप को एक्टिव रखा करें। व्हाट्सएप को मेरे व्हाट्सएप को बिल्कुल ख़ास प्रायोरिटी पे रखें कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी मैसेज अनसीन ना जाए, ठीक है? मेरा जो मैसेज, व्हेनेवर यू सी माय मैसेज, जस्ट एंडोर्स द मैसेज, एक्नॉलेज द मैसेज, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? इफ यू वांट अ ग्रेड फ्रॉम मी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you so much, everybody. Have a nice day. Inshallah, see you tomorrow with another session, Hafiz, exponential sir. and reciprocal graph. Yeah, sure. Allah Allah Hafiz. Hafiz, Thank sir. you. Sir. Sir, Thank you, मेरा बच्चा. Thank अल्लाह you. हाफ़िज़ सर। excuse me, sir. Allah Hafiz, बच्चा. Allah Hafiz. सर अल्लाह हाफिज़ सर। जी बच्चा. जरा वो आपसे बात करनी थी। जी बोलें. सर मैं कह रहा था ना कि मैं तो ये शुरू में क्लासेस में नहीं था ना, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है सर ये नंबर्स के उसमें सेक्शन में, उसमें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो जो y इज इक्वल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, वो है ना, उसमें मेरा सर ये बेसिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर। कोई बात तो नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ज़रा सुन लें पहले, तो अगर आपको समझ आए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। आप ज़रा गौर करें कि हम लोगों ने आज एक मिनट, ज़रा मैं ज़रा ये टाइटल दे रहा हूँ, Please. ड्राइंग ग्राफ्स। हाँ जी, आप ये गौर करें कि आपको मैंने एक प्लेलिस्ट भेजी है, देखिए। जी जी उसमें देखिए सर, लेकिन ये जो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी ना, वो वाले क्वेश्चंस नहीं थे जो आपने लिस्ट में किए थे आपने। मतलब लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में सिर्फ दो टाइप थे, वो एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड का था, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस थे सर वो डेसिमल्स में थे, एडिशन और वो सब्ट्रैक्शन थी उसमें। और इसीलिए कहता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट 40 लेसन्स लिए हैं ना, ठीक है, जी उसके अंदर आप फर्स्ट 15-16 में शायद नहीं थे, एग्री? जी 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 बिल्कुल। तो आपको जो टॉपिक में मसला होता है वहां से उन टॉपिक्स को पहले कर लो क्लियर, ठीक है? जी सर। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं आगे, ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है ना हमारी, ठीक है? जी जी तो मैं उस प्रैक्टिस में आपको फिर वहां पे दोबारा वहां पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सही है सर। मेक श्योर करो कि जो काम आपने करना शुरू किया आप उस काम को सही तरीके से ख़त्म करो, ठीक है? नहीं नहीं आज वाला, और अब जब से क्लास स्टार्ट किया है रोजाना उसका क्लास के बाद भी उसको अभी प्रैक्टिस। आज मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है ना, ठीक जी है? जी सुबह जी मैं स्कूल में फिर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, हेलो। आपको पता है मैं सुबह स्कूल में फिर स्टार्ट पढ़ाऊंगा, मेरा सिंगल क्लास है, कल डबल नहीं है, एग्री? जी स्टार्ट्स पढ़ाएंगे, सही है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपको जो आज स्कूल में पढ़ाया है आज उसी तरह के तमाम क्वेश्चंस आप अपने पास पेपर में प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 घंटा बैठो, नहीं नहीं बिल्कुल सर, बैठे था। ठीक है? जी सर, मतलब कल के लिए अब स्टार्ट करूँ, और अभी क्लास के बाद आपने कहा था क्वेश्चंस करने हैं, वो भी करने हैं। बेटा ये जो आपको मैंने ड्राइंग लाइंस के क्वेश्चंस भेजे हैं ना, ठीक है, जी 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 द वर्कशीट बासा वर्कशीट की यो क्वाड्रेटिक ड्रॉ का और यो ड्रॉ का लाइन पोइशवे जी सर जी। मस्ताकार बहुशी, ओके, सही है सर, ओके, खुदा गुड हाफिज। लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।